Hare Krishna, everyone. Welcome, everyone, in today's session. And we have been doing Goloka Chart, so we will continue there. A couple of devotees have messaged they might not able to be here because there is a session at London Temple today. So they're visiting the temple, so they won't able to make it. So they have requested a recording. So hopefully they will catch up there. Hare Krishna. Let's get on with the Mangalacharan and then we will start the session as usual. Ajnanatimirandasya Jnanajanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yudapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Right, so Mangalacharan is very important because this is the segment where we start with the auspiciousness. We seek the blessings of Guru and Gauranga, the Lord, that whatever we do, we get the blessings to get further and further in our spiritual progress. So in this segment, we've been working on our Goloka chart, and we have been discussing this. We have seen the Devi Dham called material world. We have seen the Mahesh Dham Shivaloka, which is the transaction from spiritual to material. Then the very first thing we get it, this is what usually here on Bhumi, or we say earth, we consider as the highest one. Well, most of the time, devotees think heaven is the biggest because usually we say Swargiye. But heaven is not, heaven is still in material. But then when we think of spiritual, a lot of us, we think Vaikuntha, Haridham as the topmost. But that's not even topmost. Even further than that, there's a mention of Ayodhya,
which is the Lord Ram's place, but then Goloka Dham. Goloka Dham is spiritual world, 3/4, material world, 1/4. And all of these information, they are coming from the references. So if you think of, they will be the references which you can always carry back. And it's not from one scripture or two scripture, there are plenty of scriptures. As I always say, some are Vaishnavas, some are Gauryas, some are Vedantic. So what that meant is that those who believe that Vedanta Upanishads are the topmost, they will believe, they will trust, they will have their faith in those. But then there are Vaishnavas, then they will have a wider perspective. For example, Srimad Bhagavatam is Vaishnava. So a lot of Vedantic, for example, Advait Vedanta, they might not consider Srimad Bhagavatam, but for Vaishnavas, Srimad Bhagavatam is the topmost granth, because that's how we approach it. And that's why it says in Srimad Bhagavatam itself. But again, it's the perspective where we come from, for whether we are approaching towards Bhakti Yoga or Gyan Yoga, because Upanishads are full of Jnana, which we get it here as well. Like in Bhagavad Gita, Krishna says that I will give you the knowledge. Whoever will become my devotee, I will give you. So devotees approach to the God, to the Lord with that intention, with the bhakti bhav, with the devotion, and the knowledge comes through. However, jnanis, meditators, ashtangis, they have the faith in their own endeavor that they will able to get jnani. And there are many examples of that in the Shastras. Surbhe is one of them, and Vishwamitra was another one who wanted to be Brahmgyani, but he could not until he made the peace with Vashishta Muni, and Vashishta Muni was a devotee. So, and it is a great dialogue between these two, and this is there in the Puranas as well. So as we said, the scriptural references are there, and it mentions who are the authors. So you have the Vedantas, you have the Vaishnavas, you have the Gauryas. So if you are the followers of Caitanya Mahaprabhu, then you would consider all the Caitanya Caritamrta, Caitanya Bhagavatam, and there are many more scriptures which the Gauriya Mutt followers will have rely upon it as well. They will meditate on them. When I say meditate doesn't only mean that close your eyes and focus on it. Meditate also means that you read it, you have the knowledge, you understand it, but you take the third step. And in that third step, you try to implement that. Personal application will be there. And then the fourth one, where you go and you would like to teach it to others. So I've just noticed there are many for the Hindi audience. So some of them even, because these recordings, they go on YouTube, so some of the devotees, they have requested there, but some of them, they join here. तो हरे कृष्णा, आपका स्वागत है. आप के लिए हम स्पेशली हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्रयास है. तो अभी तक हमने जो भी देखा कि किस तरीके से गोलोका चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं. गोलोका चार्ट के अंदर हमने उसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो देखे हैं, उसमें कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन सी जगह बताई गई हैं. सबसे नीचे हमने देखा कि देवी धाम है, जिसके अंदर हम हैं, इसको देवी धाम कहते हैं क्योंकि 3 गुण हैं यहाँ पे, रज, तम, सत. और ये तीनों गुणों की जो अधिष्ठानी है, जो माता है, वो दुर्गा माँ है. तो उनसे ये पूरा उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, ये पूरा जगह, तो उनसे चल रहा है तीनों गुणों की वजह से. और जो इन तीनों गुणों के परे हो जाता है, जो कि कृष्ण भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि यही हमें भी करना है, यही हमें भी होना है. तो उसके लिए हम गोलोका चार्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि वैकुंठ धाम है, वैकुंठ से भी ऊपर गोलोका धाम है. और ये जितने भी पूरा गोलोका चार्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, ये किसी एक बुक से नहीं, बहुत सारे स्क्रिप्चर से आ रहे हैं और उनके नाम दिए गए हैं. ब्रह्म संहिता है, पद्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिससे ये सारे रेफरेंसेस लिए गए हैं. तो ये भगवद गीता का एक वर्स है. दिस इज द वर्स फ्रॉम भगवद गीता
where Krishna himself says, yet there is another unmanifest nature. So this is where the reference of Brahman and Paramatma and the soul within himself is there. So Krishna यहाँ पे बताते हैं भगवद गीता चैप्टर 8 वर्स 20 के अंदर कि किस तरीके से हमारे अंदर, जैसे भगवान ने चैप्टर 2 के अंदर बताया कि हमारी जो आत्मा है, ये बात हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या हमारे जीवन में ये उतरता है? वो तब पता लगता है जब बाहर की चीजें हमें परेशान नहीं करती, जब हम ये समझ जाते हैं कि बाहर की जो चीजें हैं वो सिर्फ शरीर को परेशान कर सकती हैं, मन को परेशान कर सकती हैं। अगर मन शरीर के साथ लगा है, अगर मन आत्मा के साथ लगा है, तो कोई परेशान नहीं कर सकता। और इसी को कहते हैं कि डिवोटीज जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान के ही चिंतन में लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, लेकिन उसके बाद क्योंकि भगवान के साथ मन लगा हुआ है, वो भी, उनको पता है कि वो भी स्पिरिचुअल है, वो भी आध्यात्मिक है, उनकी जो आत्मा है वो भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है। तो इस वजह से उनकी आत्मा को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि चैप्टर 2 में सबसे पहले जो भगवान ने आत्मज्ञान दिया था वो यही बताया था। So the very first thing about the soul, what Krishna said in chapter 2 is on what we say Atmagyan, the knowledge of the soul, that nothing could happen to the soul. But then after that, the real nature of Paramatma. तो आत्मा के बाद भगवान बताते हैं कि सिर्फ आत्मा ही नहीं, आत्मा के परे परमात्मा भी है। तो उसके बाद हम आगे और देखते हैं भगवान किस तरीके से गोलोक वृंदावन के बारे में कहते हैं। So a lot of us, we might think, and Mataji, who is not there, as I said, she's in the temple, she had asked one question, either last week or a week before, that we have heard of obviously Swarg, heaven, but we have also heard of Vaikuntha, but very rare we hear about Golok of Vrindavan being spiritual. तो ये क्वेश्चन एक पहले माता जी ने पूछा था कि हमने स्वर्ग के बारे में सुना है, हमने वैकुंठ के बारे में सुना है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम गोलोक वृंदावन के बारे में कुछ सुने। तो ये कहाँ से इसकी नॉलेज आती है? तो यहाँ पे हम बताते हैं कि जब गोवर्धन की लीला हुई और जब ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान कृष्ण की स्तुति करी, तो उस स्तुति को एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक ग्रंथ के अंदर सजाया गया, उसका नाम है ब्रह्म संहिता। तो ब्रह्मा जी ने जो बोला उसकी संहिता, उसको इकट्ठा किया गया, ब्रह्म संहिता करके एक हमारे पास स्क्रिप्चर बना। और वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज भगवान कह रहे हैं। तो शुरुआत कैसे होती है? जब भगवान, इसके पीछे भी एक लीला है, ब्रह्मा जी जो है वो इल्यूजन हो जाते हैं, वो उनके गोपाल उठा के ले जाते हैं, बाद में वापस आ जाते हैं, लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि ये जो कृष्णा है ये सिर्फ एक गोपाल ही नहीं है, ये भगवान है। तब जब वो नीचे आके कहते हैं कि आप भगवान हो, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इस चीज का रियलाइज कराया। तो भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, मुझे क्यों कहते हो, सबको मालूम है आप तो नारायण से निकले हो, आपके परम पिता तो नारायण है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि पर वो नारायण कहाँ से निकले हैं? नारायण हम विष्णु भगवान को कहते हैं, क्योंकि वो नर आयन, वो पानी में वास करते हैं, तो पानी में वास करने के लिए उन्हें हम नारायण कहते हैं। तो कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हो, मैं तो नारायण से निकला हूँ, लेकिन नारायण कहाँ से निकले हैं? तो उसके लिए हमने देखा था कि महाविष्णु जो है वो भगवान कृष्ण से ही निकलते हैं। उसके बाद जो ब्रह्मा जी कहते हैं वो ये होता है कि आप ही का वो है जो सबसे ऊपर लोक है अध्यात्म जगत में, वो आप ही का है, और वहीं पे सत्य चित्त आनंद है, और आप ही हैं जो हर किसी चीज के कॉज है। और आज हम देखेंगे चतुर, जो भगवान से कैसे दुनिया, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे मटेरियल हो, अध्यात्म हो या भौतिक हो, वो कैसे निकलना शुरू होती है, कैसे बनना शुरू होती है। So this is how we understand that Brahm Samhita is that document which compiled all the glorification from Lord Brahma to Krishna. When Krishna came along and Brahma ji paid his obeisances, his respect to Lord Krishna, and Lord Krishna said that, why are you doing it? I'm not. Why are you calling me your father? Everybody knows that Narayan is your father. And Narayan, as the name says, is someone who lives in the water. And Vishnu Bhagwan is the one who is referred as Narayan. But then Brahmaji replies, like, yes, I come from Narayan, but where did Narayan come from? Narayan comes from you. And these are the verses which he makes. This one, so it says BS5
5.2. So Brahma Samhita 5.2, chapter 5, verse 2. And in the next one, we will see that what Krishna says. It says, Krishna, who is known as Govinda, is the supreme. So Govinda is, Go is for the cows. Govinda, somebody who loves cows. Gopala, somebody who takes care of cows. So that's where the word comes in. Goloka, a place of cows. Gokula, again a place of cows. So that's the reason we call all of these places. They are different markings, but the meaning is very similar and very same. Goloka Vrindavan. So it's the name itself was a Vrindavan, but again it's been called Gokula because of cows. And it says cows are very, very dear to Krishna, and cows are very holy as well, like what we can understand. So it says he has an eternal blissful spiritual body. So it says Krishna Satyachit Ananda Vigraha. So Satyachit Ananda Vigraha. Well, any kind of spirituality we follow, this is what everyone is looking for. Satyachit Ananda. That's it. Satyachit Ananda. In these three words, all the spirituality comes in. I'm not saying the religion, because these days the difference between religion and culture has disappeared. So a lot of people, they follow the culture and they think they are doing religious activities. But religion is supposed to be what you do. So again, especially a religion like Hinduism. So it's not a religion itself, because there is no one single book for Hinduism. If you think about, then there are different ways of spirituality given in Hinduism. In other religions, for example, Sikhism, there is a book. Jainism, there is one particular book. In Islam, there is one holy book. In Christianity, there is one book, but obviously Old and New Testament. But similarly, Torah for Judaism. Similar, whichever main predominant religion we think of, this is what they have. But in Hinduism, if you think about it, there are different roots given. Bhagavad Gita itself, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyan Yoga, Ashtanga Yoga, and then it says Bhakti Yoga. So all different roots are given, and any of those roots will reach to Krishna. That's what Krishna says in Bhagavad Gita. However, Krishna also says that the Bhakti Yoga, Bhakti devotee, Bhakt are the more dearest to me. And whichever route you take, at the end you will become a Bhakt. So whether you consciously become a Bhakt, or doesn't really matter, whichever route you take, you will become Bhakt. And if you think about Swami Vivekananda ji, and Swami Vivekananda ji said actually for his own master that because people used to say, oh, he's Ramakrishna Paramahansa, or he's just a devotee, and he always keep praying and all. But you give lecture, you give lecture. Your lectures are powerful. And that's what Swami Vivekananda ji says. Swami Vivekananda ji said that externally, he said for Ramakrishna, his own spiritual master, that externally he looks like a devotee, a bhakt, but internally he's a jnani. And me, externally I look like a jnani, but internally I'm a devotee. So what basically he meant, that whether you are a jnani or you're a devotee, whether it's a Vedanta, Dvaita Vedanta, you will end up with the devotion, with bhakti, with the welfare of others, to the society and the people at large. Not only people as such, but all the living beings. We are talking about sustainable world these days. So if you become a devotee, that takes care of everything. तो जो हमने यहाँ पे कहा कि ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के लिए यहाँ पे जो कहते हैं, उसमें बहुत ही एक अच्छी चीज है. सबसे पहले तो कहते हैं ईश्वरः परम कृष्ण, जो सबसे बड़े मेन टॉप मोस्ट भगवान है, ईश्वर है. कई बार कुछ लोग भगवान ईश्वर के अंदर भी डिफरेंस करते हैं, लेकिन हम उस डिफरेंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उस डिफरेंस में भी ईश्वर को भगवान से बड़ा बताते हैं. लेकिन यहाँ पे खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो परम ईश्वर है वो आप हैं कृष्ण. और आप कौन हैं? आप हैं सत्य चित्त आनंद विग्रह. तो सत्य चित्त आनंद हैं आप. तो ये तीन शब्द जो है सत्य चित्त आनंद, इसी की खोज सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी मार्ग पे हो, चाहे एक रिलीजन में हो, चाहे दूसरे रिलीजन में हो. हर इंसान खुश रहना चाहता है, तो वो आनंद होता है. हम कहते हैं कि हैप्पीनेस एंड ब्लिस के अंदर फर्क है, तो खुशी और आनंद में फर्क है. खुशी हमको एक चॉकलेट, एक आइसक्रीम, एक रसगुल्ला से हो सकती है, एक शर्ट से हो सकती है, एक नई कार से हो सकती है, एक नए घर से हो सकती है, शादी करने पे
हो सकती है लाइफ पार्टनर के मिलने से हो सकती है, बच्चे करने से हो सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन से हो सकती है, लेकिन वो खुशी होती है क्योंकि थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में, थोड़े सालों में वो चली जाती है। और हम सारे ही इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन आनंद, आनंद जिस चीज को हमारे शास्त्रों में रेफरेंस दिया जाता है, वो है जो कि जिसके लिए बाहर से, अभी जो इतने भी एग्जाम्पल दिए वो बाहर से, चाहे शर्ट नई मिल रही है, चाहे घर नया मिल रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हम बाहर से कुछ चीजें लेके हैं, हमारी खुशी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जब आनंद मिलता है तो वो आनंद के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं, वो आपको अंदर से मिलता है। और अंदर से कब ये मिलता है? जब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होता है, अनुभूति होती है कि भगवान आपके साथ हमेशा है, ऐसा है ही नहीं, और जो हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो किसी ने कहा, आज ही मॉर्निंग में क्लिप आई जिसका रेफरेंस है शास्त्रों में, लेकिन वहां पे क्या कहा कि जो आपको चाहिए वो हुआ तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप खुश होंगे, जो आपको चाहिए वो नहीं हुआ तो और भी अच्छा है क्योंकि फिर आप जो चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन भगवान जो चाहते थे वो हो गया। तो कहने का ये मतलब है, भगवान जो चाहते थे वो हो गया, तो उसके अंदर आपकी खुशी ऑटोमेटिकली है। आपको पता अभी है कि नहीं है, अलग बात है। जैसे कि बच्चों को नहीं पता होता कि उनकी खुशी किस में है, पेरेंट्स को पता होता है। पेरेंट्स उनको कहते हैं ब्रोकली खाओ, पेरेंट्स उनको कहते हैं खून बढ़ाने के लिए और अलग अलग चीजें खाओ, लेकिन बच्चे नहीं खाना चाहते। लेकिन कभी जबरदस्ती वो खा भी लें तो उनकी मन पसंदीदा चीज नहीं हुई। और कई बार बच्चे कहते हैं ओ हमारे पेरेंट्स ऐसे खराब हैं, जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वही बच्चे बाद में कहते हैं कि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ जबरदस्ती करी थी, हमको इतना अच्छा खाना खिलाया जो कि हम नहीं खाना चाहते थे, हमें वैल्यू नहीं मालूम थी उसकी, लेकिन क्योंकि उन्होंने खिलाया तो अब हम उस चीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम भगवान को समझ सकें तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और बुरा क्या होता है, जो हमने चाहा वो नहीं हुआ तो हम मानते हैं बुरा हो गया, लेकिन भगवान यही कहते हैं कि उसके अंदर भी अच्छा ही है क्योंकि मैं ही उस चीज का अप्रूवल देता हूँ। तो इसको अगर देखें तो इसलिए कहते हैं भक्त को कभी कोई चिंता नहीं होगी। अगर भक्त को कोई एक पीड़ा होती है तो वो सिर्फ इस चीज की पीड़ा होती है कि बाकी लोग भक्त क्यों नहीं बने। सिर्फ इस चीज की पीड़ा भक्तों को होती है, अपने लिए कोई पीड़ा नहीं, किसी और के लिए पीड़ा कि भाई अब देखो मैं तो ब्लिसफुल हूं, आप क्यों नहीं ब्लिसफुल है, और अगर आप ब्लिसफुल हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स क्यों नहीं ब्लिसफुल है। सो ये भक्त हमेशा चाहते हैं। So what we get from here, Satya Chitta Ananda, the difference between happiness and an Ananda we have discussed before, and this is what we are saying, that we need to share this with others, and that's the only thing a pure devotee would like to have, that nothing for himself or herself, but for the society at large. And this is what we're saying, that Vigraha is the deity, the form. But he says it's not the temporary form, it's the Satya Chitta Ananda form. What is Satya Chitta Ananda? It says eternal Satya Chit, consciousness, and Ananda. So spiritual, eternal, conscious bliss, which means it's eternal. It's not dependent on the new car or the new job. It's, and you're conscious about it. Like a beggar is there, beggar is the son of the millionaire, but he doesn't know, and he's begging. Why? Because he's not conscious of his wealth. Wealth is there, and this is what we are. We are a spiritual being, but we don't know. We are begging. We are begging for very little, very small things. And this is what Brahma is saying. So based on this, Goloka chart is compiled, and that's why we are doing Goloka chart. Why? Because Brahmaji has given so many details about it. And Brahma, who is Brahma? Brahma is the topmost in this material world, the material world we are in. Brahma was the very first jiva. Brahma was the very first living entity, like us. So this is what we can understand here. Of course, all it says anadir, adir, go, and like you sarva karanam. You are the source, primal cause of everything, and this is what we will see now. So this is another 543. We can see, we can understand. Goloka Nama. It's so now we have got the Goloka chart. We have discussed this, but how do we know it?
from this verse. It says Devi Dham, Mahesh Dham, and the reference is given above and beyond. Like beyond it, you will get that, or just before that, you will get it, or next to it, you will get it. That's how the reference is being given. So based on all these references, the Goloka chart has been put together. We have seen this division of rasas. Now, what is rasas? Rasas are the mood we are in. For example, I always say the man and women could hug each other. So if I will hug my mother, the mood is different. Physically, somebody will see and say, wow, a man is hugging a woman, right? But if I will hug my daughter, the mood is different. If I will hug my colleague, then the mood is different. If I will hug my wife, the mood is different. And these are defined as different rasas. तो जिस तरीके से हम समझ सकते हैं गोलोका चार्ट किस तरीके से बना, हमने रेफरेंसेस देखे, वर्सेस देखे, ब्रह्म संहिता के और भी बहुत है, लेकिन जो मेन है वो हमने देखे जिसके अंदर सारे धाम दिए हुए हैं. फिर ये हमने चक्र देखे हैं जिसके अंदर रसों की बात होती है, और रस वो है जैसे कि ये हम देखते हैं कि एक मनुष्य जाति में हम देखते हैं एक औरत है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो स्त्री पुरुष आपस में गले लगते हैं, लेकिन अगर वो पुत्र है और माता है तो जब वो गले लगते हैं तो भाव अलग होता है. पुत्र और उनकी लड़की अगर हो वो गले लगते हैं तो भाव अलग होता है. अगर वाइफ के साथ में हो या ऑफिस में कोई काम करने वाली हो स्त्री तो भाव अलग होता है. तो उसी तरीके से भगवान के साथ सम रहते हैं. कुछ पुष्टि मार्ग में है जो भगवान को बच्चे की तरह पालते हैं, कुछ भगवान के दास बनना चाहते हैं, कुछ भगवान के साथ में एकदम इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जैसे गोकुल के अंदर गोपियां थी कि बस भगवान तो हमारे ही है, हमारा कोई है नहीं, जैसे मीरा भाई जी गाती थी उनके लिए. तो ये सिर्फ भाव है, ये भाव है सारे के सारे, और उन भाव को यहाँ पे अलग अलग कलर में दिखाया है. And this is what we say, that right at the center of this Goloka chart is Krishna, Krishna and Radha. And we will see where Radha ji comes in. But now it says name of Krishna's personal abode. तो हम भगवान की जो जगह है उसके नामों का महत्व देखेंगे. तो इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं जो हमने कुछ शेयर करे हैं, लेकिन उनको एक एक करके अगर देखें तो लिखा है गोलोका. गोलोका, गोलोका मतलब प्लैनेट, लोक. अगेन हमने पहले इस चीज के ऊपर बात करी थी कि लोक प्लैनेट ऐसे नहीं जैसे कि हम सोचते हैं. हमारी सोच और जो शास्त्रों में लोक मेंशन है उसमें बहुत फर्क है कि हम प्लैनेट देखते हैं, लेकिन क्या वही प्लैनेट है? नहीं, वो प्लैनेट नहीं है, पर हमारी समझ के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं वैसे हैं. सो द डिफरेंट नेम्स आर गिवन. And Goloka, Loka is in Sanskrit is the loose, very loose translation is for planet. And if you will carry on with it, then Gokula. Kula is where we get the shelter. Now again, it depends which Kula you belong to. So coming from Indian ancestry, ethnicity, people always say that. So which Kul you belong to. So basically, which Kul has given you the shelter, which Kul you got the birth in, or which Kula you get the progression from. So all these things, they come over there. And moving forward, we say Vrindavan. So Vrinda, Van. So Van is the village, and Vrinda is for Tulsi Devi. And Tulsi Devi, that's why Tulsi Devi is considered as Bhakti Devi also. That Tulsi Devi gives us the Bhakti, the devotion. So all the devotees, they always pay respect and do the arti, go along and take circles of Tulsi Ji. But that's the reason we call it Vrindavan. And then Krishna Loka is another. And these words, they are given in the Shastras. So when devotees, they read it, they try to understand it, then this is the conclusion they reach, that all these different names, they refer to the same place. And that's the place, topmost place in Goloka chart. And that's what we are discussing right now. Sweta Deep, ocean of milk. Now, you might have heard or might haven't, but there was a mention that it was very common in India. Like there is another common saying in India. I remember when I was a child that people say, still a lot of them, that God is in your heart. People say God is in your heart. And God is in your heart? Okay, what does that make sense?
Then I was thinking about it. And then it says, at children's class, I said it, and it was quite funny. But if you think about it, even now, when a boy and girl, they come together, and the boy will say, oh, you have taken my heart, or you live in my heart. Oh, in my heart, there is nothing, just you. But now, why heart? Because biologically speaking, we all know that heart is only a pumping organ. Blood, it pumps in and out blood throughout the body. Why do we associate that with the feelings? And the reason is because in the region of heart we have soul and super soul, and super soul is called Paramatma. Super soul, Paramatma. And that's why, because the soul is the essence of us. We are actually soul, not the body, right? Soul is, so like a car is there and the driver is there. So the driver is the main thing in the car. If the driver is not there, car is just a metal piece, right? And that's amazing that this was the understanding for layman, and still today people use it for the heart, for the feelings. But why? Our scriptures explain it why. Because in the region of heart we have super soul, we have Paramatma, and that's why we say Param, or Krishna says in Bhagavad Gita that the part and everyone is part and parcel of me, and I live in everyone's heart. Right? But again, not heart itself. It's if we have the heart transplant, what will happen? It's in the region of heart. So the fundamentals should be very clear. And then another thing we might have heard of, that India used to be called, still called, but obviously not predominantly people are aware of it, but India used to be called Bharat. So Baba Ramdev's products, I've noticed that it says made in Bharat, not made in India, because India was a name given by Westerners. Because of the Indus River, the word India came out. So that's the reason. And similar thing goes for Hindu, because Hindu. And there was a mention that Bharat Varsha was much bigger than what we have at the moment. And that's so true. There's another presentation which I did is on Vedic cosmology. And in there, what Bharat Varsh, as per the scripture, means, it's amazing to know. And there is a mention of many different material of the liquid in the river which used to flow in Bharat Varsha, not the Bharat as we know in India, which is a very reduced version of it. There was a time when there was nothing else, it was only Bharat. And there was a mention as well, because in Bhavishya Purana we got, so the mention of Chanakya and Chitragupta is there in Bhagavad Purana, and in Bhavishya Purana also, where the mention is Bhavishya, what will happen in the future. So Bhagavatam happened between, so many preachers were there, but Sutji was there, Shukdev Goswami ji was there, and they narrated the Bhagavatam to Parikshit Maharaj. And Parikshit Maharaj was didn't have a lot of children then. But then once he will die, who will become the next king? That's also mentioned. So Shukdev ji giving not only the past or the present, but the future to Parikshit Maharaj as well. And that's there documented in the Bhagavatam. And that time, Chanakya wasn't there. So Chanakya is a non-figure, but there are many more names mentioned there, which is quite promising. That's how vividly things were defined. So where it's mentioned ocean of milk, the reference used to be there. People used to say, oh, in India, in Bharat, actually, oh, in Bharat, the river of milk used to flow. And people think very, very wisely that it was the analogy, that maybe, or just, just to maybe exaggerate a bit, because there used to be so many cows, almost every house used to have it. And I remember one of my relative in Vrindavan, they still got cows. Well, they used to have many cows, but they still got a couple of cows just for themselves, for their own personal family. They don't go out for milk anywhere. And that used to be more or less. And again, when I was growing up in India, in Delhi, I remember myself that we used to go to the nearby and at a walking distance. And when I say walking distance, less than
5 minutes. You walk and you are there, and the cows are there, and you take direct milk. And if we go even further back, then we could think how many cows. Like how many cows Krishna's dad Nanda Baba used to have it. Millions. There's a mention of millions. And there's a mention number of times in the Shastras that when the king used to do so many yagyas, he used to give away so many cows, like hundreds and thousands of cows. And that's why all these Rishi Munis, they were so effluent. They were opulent. They had cows, and that's what they needed. They needed only cow, because from cows they could do everything, and they used to take care of the cow like a mother. So because of that, it mentioned the ocean of milk is there, and that's why that place is also called Shweta Deepa. So Shweta is a milk, and Dweepa is the island, and again the planet, but island. All these names of Krishnas are interchangeably, because somewhere, if there is a mention of cow, or most of the time it's cows, then Goloka or Gokula. But if a mention of Tulsiji, Vrindavan, otherwise because Krishna lives there, Krishna Loka, and because of the milk. Before we go any further, any question on anything we have discussed so far? Okay, because yeah. So we shall continue. But if there is any question anytime, feel free to say, okay, I go. Okay, Hare Krishna. What happens to soul and Paramatma when people have a heart transplant? Haribol. Okay, I'm not sure if you asked this question before I mentioned the heart transplant example or after that. So I will cover that anyways. And your name is very nice, Hare Krishna. But if you could put a relevant name, it will be easier to address you. But yes, if you like it that way, no worries. But it's always good to have the reference. Okay, so what happens to soul and Paramatma when people have a heart transplant? Yes, so the mention is not that in the Shastras, the mention is not that it's in the heart, in the soul is not in the heart, Paramatma is not in the heart. It says in the region. If we see the Sanskrit, it says in the region of heart. And if you see, so it says in Bhagavad Gita, but if you go in Bhagavatam, then the very detailed version of this body is given, and that's the most amazing thing. I like it because again, for the children, we are doing the journey of self-discovery. So it's self-discovery, just finding myself, finding ourselves, and what's more important to me than myself? Nothing, right? Whatever it is, it's more important to me because it's me or mine. If it's not mine, it's not interested to me, right? So I am very interested to myself. This body, most of the time, that's what we consider ourselves. So this body is very important. But how this body works, in Bhagavatam it's given. Amazing. What does it say? It says, and scientifically, if you think about, so for example, if we have ears, but if the sense of the ear is not working, the ears physically are there, but we will not able to hear anything, right? So there are many dumb people, so dumb and deaf. So they have the tongue, they have the ears, but they can't speak, they cannot hear. So we understand it's not a physical bit in there. We need to have something inside. Now, obviously, science got their own names for it, but what Bhagavatam says that each body part, and that goes with the eyes, nose, tongue, skin, genitals, legs, hands, throat, there is a demigod who's making it happen. So it says Adhishtan Devata. So a demigod is there. And another reference you might have heard, a lot of people used to say it in India, that this body itself is the temple of the Lord. This body itself is the temple of Lord. Why? Because again, soul is there, super soul is there, but all the demigods are there as well. Now, again, not that all the demigods are living there, but all the demigods have taken care of some part of our body. And Bhagavatam gives that in very much detail, that how and where, which demigod sits. So sits means that his energy sits. So he makes that body part works. And if we go through many more, other examples of the cross references are also there.
So to this question, what happened to the soul and Paramatma? Soul and Paramatma, they are there in the body. But if the heart transplants happen, they are there within the region. They are not in the heart. So you cannot point out. Anyways, soul is there nearby, but super soul moves around because super soul is not dependent. Soul is what we are. We are Atma, but super soul is a bit different than us. But the size of the soul is given in the Upanishad, and in Bhagavad Gita, Srila Prabhupada gives a reference. But nothing much about Paramatma is there. But again, somebody says, so the size of the super soul is 10,000th of the tip of the hair. That's given. So somebody said that these days, not many years back, but these days, we have machineries which can actually see the size of that as well. We can see the size of it. But then the next thing comes in, yes, you can see the size of it. But then again, it's not only the size, it's the material as well. We cannot see all the material. The soul itself is a spiritual. Now, how to understand that? Well, the air is there. What are the particles of the air? We can see it. We cannot see the air itself, can we? Because the particles are different. There are many, for example, wavelength of for the ears. The voice is there, we cannot hear. Why? Because our body has the limitation. Our organs have the limitations. Right? A lot of time when, especially for jaundice patients, when they eat even sweet, they feel bitter. Why? Because not the sweet is coming with the sweet. The sweet dish is coming with the sweetness, but the tongue got the bitterness. Similarly, so it doesn't really matter what's there outside. If our body is not functional, right, or it's not within the range, we will not able to see, we will not able to hear, we will not able to smell. A lot of time that also happens. When they give the perfume to check, after a while, then they make you smell coffee. Otherwise, you will not able to see the difference. And then all your perfumes go back, and then you can spread more. So all these understanding that accumulate together just to say that we are the part and parcel of Krishna. We are a spiritual being having human experience rather than the other way around, which we think we are. So soul and Paramatma, they stay there within the body because the consciousness is there. If the soul will leave the body, then the body will not be conscious anymore. That's the main symptom. And again, that's in Bhagavad Gita. So we check that. Okay. So the next thing here, what we said, that when Krishna descends, so we say Krishna Janmashtami. So we say Janmashtami, but Krishna didn't take birth there actually. Krishna appeared there. Krishna descended. So a lot of time when we see the stage show, right, and we see somebody, one of the character comes through from behind and right at the front of us, right? We didn't know where was the person before, and once the person finished, the act will go away. We don't know where the person going. So what we say, we can say, oh, the birth has happened now. But basically, birth hasn't happened. The person appeared and disappeared. The same thing goes with this body. Body takes birth, body dies, but the soul within that, no, it keeps moving. And again, this is a verse there in chapter 3. So we say Krishna descends to the material world. Goloka also descends with him to serve and is known as a Gokula. And this is where the reference is making a bit clear. So Goloka, so we say Vrindavan Goloka, which is spiritual. And when we say Vrindavan Gokula, that's usually the mention is here on the planet Earth. So Goloka is a spiritual, Gokula is material. That's another way of understanding it. However, again, devotees use this interchangeably. But as per the Shastra, this is what it is. तो हमारे हिंदी भाषी भक्तों के लिए अगर कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप जरूर पूछें. अभी पूछ सकते हैं, जब भी चैट में पूछ सकते हैं, वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी पूछ सकते हैं. तो हमने देखा कि भगवान के ये अलग अलग जगह के नाम होते हैं. गोलोका, गोकुला, वृंदावन, कृष्णलोका, श्वेतद्वीप. तो भगवान यही कहते हैं कि जब भगवान ऊपर से नीचे आते हैं तब भगवान
अपने साथ में अपना रहने के अपने लोग भी लेकर आते हैं। इस बारे में हमने बात करी थी कि जब हम इंडिया से यहाँ पे आए लंदन, तो हम अपने साथ में इंडिया का थोड़ा सा कल्चर भी लेकर आए। फिर कभी, अब जैसे मैं सबसे पहले आया, फिर मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ भी वहां से आई। ऐसे धीरे 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 करके क्या होता है, आप जहाँ से आते हैं, जहाँ के होते हैं, वहां से आपके साथ में और भी लोग आते हैं, और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप ही के जैसे लोग आपके पास में मिलना जुलना शुरू करते हैं। तो जैसे ऑफिस में अगर आप इंजीनियरिंग काम करते हैं तो आप इंजीनियर से मिलेंगे, और वैसे कल्चरली अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडियंस से मिलेंगे, वैसे आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन से मिलेंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जब भगवान कृष्ण ऊपर से आते हैं तो अपने धाम का एक स्वरूप लेकर आते हैं भगवान। तो इसलिए कहते हैं जो भूलोक पे, धरती पे वृंदावन है, वो भी आध्यात्म का ही एक पार्ट है। बस जैसे भगवान आए हैं अपने साथ वो भी लेकर आए। तो उस टाइम और उनके साथ में जो गोलोक बालक थे वो भी सारे वहीं के थे। ऐसा ऐसा भी, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जब भगवान कहते हैं अच्छा मैं लीला करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कहा सारे देवी देवताओं को कहो कि आप भी आओ। अगर भगवान की इच्छा रही तो हम इसके बाद में भागवतम पढ़ेंगे, और भागवतम के अंदर जब शुरुआत होती है तो यही होता है कि किस तरीके से ब्रह्मा जी देवी देवताओं के साथ में शिव जी को लेकर जाते हैं भगवान की आराधना करने। फिर भगवान कहते हैं अच्छा चलो मैं आऊंगा, और जब आया कहते हैं मैं आऊंगा तो सबको कहो कि आप अपना अपना रूप लेके पहुंचे। तो सब अपने अलग अलग रूपों में आते हैं। So we can understand this, that the spiritual world has the real, but even here we have the expansion of it. Whether it's the Krishna comes himself with his own body, his spiritual body, Satya Chitta Ananda Vigraha. So he comes with his own spiritual body. But otherwise, if you think, the earth we have here, that's also the Vrindavan we have on the earth, that's also the planetary portion of the spiritual world. So we say why. Now again, I can share the slide with you, but because there are many more references there, that why focus on Gokula. But again, what has already been said. So this is where we're going to get in. And again, there is so much detail and so many pastimes we can discuss. And I have been skipping a few. If you think I'm going slow, I have been skipping a few. For example, I didn't share the pastime between Vashishta and Vishwamitra. That's amazing. The way they actually fought a couple of times. So if we discuss that it will go even slower, which we can, because we are not in a race. We don't need to finish anything. We are here to understand. Fundamentally, we should understand, and it should make us clear. But one thing which I will introduce now, and we will carry on next time, which is the very first, what we call Chatur. Chatur is 4, and then it's the expansion of Krishna. तो हम देखेंगे यहाँ पे, हमने देखा कि ये गोलोक धाम है। गोलोक धाम के अंदर हमने बात करी अभी तक कि हमने रसों की बात करी और डिफरेंट कलर्स की बात करी। हम फिर और इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में समझने के लिए। और मैं यही कह रहा था कि डिटेल में हम और जा सकते हैं, क्योंकि भगवान की इतनी कहानियां हैं, अलग अलग कहानियों से हम अलग अलग चीजें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम गोलोका चार्ट में आगे बढ़ेंगे। अभी एक चीज यहीं पे बात करते हैं, फिर अगले सेशन के अंदर अगले सैटरडे हम इसके और आगे करेंगे। लेकिन वो क्या है कि जो भगवान से सबसे पहले, तो भगवान कृष्ण है, सब कुछ भगवान कृष्ण से निकला है। तो श्री ईशोपनिषद का इन्वोकेशन वर्स है जो बहुत ही प्यारा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णमदः। ये वर्स क्या कहता है कि भगवान पूर्ण है, भगवान से निकली हुई हर चीज पूर्ण है। तो आप और हम सभी पूर्ण हैं, लेकिन बस सत्य चित्त आनंद हम क्यों नहीं है? सत्य है, हम इटरनल हैं, जैसे भगवान ने कहा हम आत्मा है और आत्मा इटरनल है। लेकिन चित्त कॉन्शियस हम नहीं है। सिर्फ दिक्कत ये है हम कॉन्शियस नहीं है। हम कॉन्शियस क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा ना मान के शरीर मानते हैं। तो शरीर जो करता है तो बस हम उसी में चले जा रहे हैं। अगर जब भी हम ये अपने आप को फील कर पाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो हम इस चीज को फील कर पाएंगे कि हम कॉन्शियस हो पाएंगे। और जब कॉन्शियस होंगे तो हमें पता लगेगा कि आनंद है, सब जगह आनंद है।
पास्ट में भी आनंद था, प्रेजेंट में भी आनंद है, और एक बार, जिसे यूजुअली लोग इनलाइटनमेंट भी कहते हैं, एक बार उस स्टेट पे पहुंच गए तो ब्रह्म भूता न प्रसन्न आत्मा, कि उसके बाद फिर आत्मा प्रसन्न है। आत्मा वैसे भी प्रसन्न है, लेकिन हम उस चीज को कॉन्शियसली फील नहीं कर पाते। इसलिए आप देखें मॉडर्न साइंस भी कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत बात करती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे चतुर, जो चार भगवान से सबसे पहले, तो भगवान पूर्ण है, हर चीज भगवान से निकली है। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते हैं, जैसे एक बैग है, बैग में 4 एप्पल है, आपने एक एप्पल निकाल लिया तो वो अब 4 बैगों का जो एप्पल था वो कम हो गया। लेकिन ऐसा भगवान के साथ में नहीं होता कि भगवान से कुछ निकला और भगवान कम हो गए। ये इस वर्ष में बताया गया, ओम पूर्णम मद पूर्णम। भगवान पूर्ण है, उनसे निकली हुई चीजें भी पूर्ण है, लेकिन वो पूर्ण चीजें निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये 4 हैं, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। और ये चारों के हम देखेंगे, अगर पुराने टाइम पे आप देखें मंदिरों के अंदर ये चारों की अलग अलग मूर्तियां हैं। और आई थिंक हम प्रेजेंटेशन में आपको शायद एक स्लाइड भी मिलेगी जिसमें मूर्तियों की स्नैप्स हैं। ये अगर कभी भी आप स्पेशली साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल टेम्पल्स में जाएं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी इन्वेडर्स आए थे तो वहाँ के टेम्पल का इतने पुराने नहीं रहे हैं, लेकिन हजारों साल पुराने मंदिर आपको नॉर्थ साउथ इंडिया में मिलेंगे। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चारों के बारे में है। और चारों के ये 4 हैं जो भगवान से सबसे पहले निकले, और नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्लियर होगा, लेकिन इसमें पिक्चर में देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान का अगर हम ये अगेन, हम ऐसा नहीं है कि भगवान कोई चकोर है, स्क्वायर रूप में है उनका कोई धाम। हाँ, कमल के फूल के रूप में है उनका धाम, ये जरूर बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो अगर आप देखेंगे इसी वजह से यंत्र जो योगा में बनते हैं, जो हम आर्य समाज के अंदर हम यज्ञ करते हैं, वो इसी शेप में बनते हैं, और यही रीजन होता है वहां पे। तो वैदिक की और चारों दिशाओं के अधिष्ठान होते हैं, वो चारों के नाम हैं अनिरुद्ध, वासुदेव, वसुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न। ये क्या करते हैं इनके बारे में भी डिटेल से तो वो हम पढ़ सकते हैं। और ये चारों कहाँ हैं? ये चारों भगवान से सबसे पहले, तो भगवान ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू किया है। सबसे पहले ये 4 निकले, अब इनसे और चीजें आगे निकलेंगी। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। So what this particular slide is saying, that of course we can't consider that the spiritual world, the Golok Vrindavan Dham is like this, square. No, it's not. But for our understanding, this is the more physical way. But the shape of the lotus is there. That reference is there. That like the lotus, and the right in the middle we have the whirlpool. That's where Krishna is, and all other lotuses, the petals, they are for different pastimes. And again, we will see what happens on each past. Well, again, how much in detail we want to go, but we will touch base on it. But what's mentioned is that the very first expansion which happens from Krishna is the 4. That's why it says Chaturvyu, Chatur. Anirudh, top in north, Vasudev in east, Sankarshan in south, Pradyum in west. So, and they, if we go, then these will be. And in olden days in South Indian temples, if you see, these 4 we could go and we could see them. That there was a time, especially for example Jagannath Puri. So there are different gates, and on each gate you will see these statues, these deities there. And even in Arya Samaj, when we do this yajna, then we give the offerings to all these 4. Not only the offerings, we take the names as well. So all these, they come from the Shastras. So the only thing is we don't read the Shastras, we just go there and sit, which is good. But again, if we try to read it, we understand the fundamental concept behind it. When our children, they ask the questions, we can give them the answers. It's not the belief system. It's the scientific system, we understand it. And this is what it says. Krishna is on top of it, and then it says Balram. The mention of the way Balram is mentioned, that there's only one difference between Krishna and Balram. The difference is in the color. Krishna is Krishnavarn, and Krishna is, it says the blackish
complexion of the cloud which is just about to rain, and that's called Ghansham. That's the color of Krishna. And Balramji is white. But what is Balramji? Who is Balramji? Balramji is that energy of Krishna which take the form and shape of whatever Krishna needs. For example, if Krishna say, I want to sleep as Vishnu. If Krishna will say, okay, I'm going to become Vishnu now, and I'm going to sleep now, right? Or I'm going to lay down, then Balramji will become Sheshnag. Right? If Krishna will say, okay, I'm going in sunlight, then Balramji will expand himself and Balramji will become his slippers, Balramji will become his umbrella. But who is Balramji? Balramji is the energy. Now Balramji is not only the Balramji as we know, like Krishna and Balram. Balramji is also Lakshman. Balramji is also in many other incarnations. Whenever Krishna comes in, Balramji is there in some form or shape. But of course, Krishna and Balram, we hear the name from Krishna's pastimes. But that's what Balram ji is. So हमने देखा अभी तक कि कृष्ण भगवान से उत्पत्ति हुई, और जैसे चतुर्व्यूह का नाम लिया, बीच में हमने बलराम जी भी देखे. बलराम जी जो हैं वो चेंज होते हैं. जैसे हम देखेंगे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो चेंज नहीं होते. They don't change. That's what they are. Right? But Balramji is not like this. Balramji is that internal potency of the internal energy of Krishna which takes the form and shape. वैसे कोई form and shape जो भी भगवान को सर्व करने में मदद मिलेगी वो बलराम जी बन जाते हैं. तो अगर कृष्णा को विष्णु बनना होता है तो वो नागराज बन जाते हैं, शेषनाग बन जाते हैं. अगर कृष्णा को धूप में जाना है तो चप्पल बन जाएंगे, छाता बन जाएंगे. कृष्णा को पानी पीना है तो पानी जिस यूटेंसिल के अंदर रखना है वो बलराम जी वो रूप ले लेंगे. ऐसा ग्रंथों में मेंशन है. तो भगवान कृष्ण और बलराम के अंदर हम ज्यादा फर्क नहीं देखते. तो इसको हम यहीं से और आगे देखेंगे. ये चतुर जो हमने देखे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ से फिर आगे और निकलते हैं. संकर्षण जो है वहां से हम आगे देखते हैं कि नारायण निकलते हैं. ये वो नारायण है जिनका नाम हम सुनते हैं, नारायण. जब आगे हम देखेंगे कि विष्णु और है, लेकिन ये नारायण है जिनको हम कहते हैं ये सबका सोर्स है, वो भी सही है. क्यों? क्योंकि इन नारायण से एक और 4 निकलते हैं. जैसे कृष्णा से 4 निकले, लेकिन फिर संकर्षण से नारायण निकले, फिर नारायण से और 4 निकले, और वो चारों पुराने वाले चारों के अंश होते हैं. इसके बारे में भी और डिटेल्स हमारे पास में है. फिर दोबारा संकर्षण से महाविष्णु निकले, गर्भोदक्षाय विष्णु निकले और शिरोदक्षाय विष्णु निकले. ये 3 जो हमने देखे हैं, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम इनको दोबारा से डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. लेकिन अभी अगर कोई जो भी हमने डिस्कस किया आप बताएं, अदरवाइज टाइम हो गया है. कोई भी चीज अभी तक जो डिस्कस करी है उसके अंदर कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो, तो प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट. व्हाट डू वी थिंक, anything. Otherwise we will continue it from next time, and we will go in detail. I appreciate at the end I had to go a bit fast on it where we are, but we will continue where we have left it this time, because and remember some of the devotees, they caught up with the timing as well. Obviously in UK we moved from GMT to BST, and then instead of 10 we moved on to 9:30, so I appreciate that. But hopefully recordings happening, helping to some devotees because they're always in touch back with that. So appreciate. Thank you for your time. If there is no timing, no question at the moment, this is the time to wrap up, and I look forward to see you next time, next Saturday, 9:30 to 10:30, and we will continue where we have left it, where in Goloka Chart from Krishna, how the spiritual world expands, and gradually we will go to from Goloka Dham to Vaikuntha, and from Vaikuntha to material. Okay. With that, Hare Krishna. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Jai Jai. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Bol. Srila Prabhupada ki jai. Gurudev Maharaj ki jai.